Hi friends, in this tutorial I am going to talk about very interesting data structure which is called a binary index tree BIT or Fenwick tree. So this is a data structure which helps you to efficiently compute prefix sums. Prefix sums are important in very variety of competitive programming problems. So this data structure is very useful to learn. So let us get started and learn about it. Hi friends, we are talking about Fenwick tree, and in this tutorial we are going to discuss three things. One is the motivation, right? Why do we use Fenwick tree? Second thing is we are going to see some prerequisites, what we need, and third is the structure of Fenwick tree, how a Fenwick tree looks like. Right? So it is also called a binary index tree, and let us start with the first part, the motivation part, right? So let us consider a very simple problem. Like we are suppose given an array and I want to add some element or I want to update a particular index of the array as 5, as 2, as 3, 1 or 4, or you can say I just want to store elements in the array, or I want to update the elements of the array, right? So we are talking about a very simple problem. You can also say this is a sum query, right? The problem is sum query, and in a given query you have to find out, and suppose the array is numbered from index 1, right? So these are the indices, right? So in every query you have to tell the sum of the elements from 1 to I, right? Which is basically the cumulative sum, right? So you can say cumulative sum of the elements from 1 to I. So this is pretty easy, right? If you just want to query, you can just make a cumulative sum array and do the computation, right? But there are two things, right? So there will be updates as well, right? So you are going to have updates. So an update says that you are going to update an index I with some value, right? So suppose I want to put 15 here, so 5 will be updated to 15, right? So you can update an index, right? And the second thing is you can query for the sum. So in each query you have to tell the sum of the elements from 1 to I, right? This is basically the sum of the elements in this range, right? Now you cannot build a cumulative array because the updates are also there, right? So the brute force way of solving this problem would be that you just iterate over the elements and find out the sum, right? You can iterate over a range. Suppose you want to find the sum till this element, right? So you can just iterate over all these elements and you can find the sum. Or suppose you want to find out a sum between this range only, right? Then you can again say this index is j, and you can simply write whatever the sum is from 1 to I minus the sum from 1 to j minus 1, right? This will give you the sum of a range, right? So that's why we can say this problem is a sum query between a particular range. But let us find out the complexity of this solution. So the complexity of this solution will be O of n for each query, right? And this complexity would be O of qn for q queries, right? O of q into n for q number of queries, right? So again we want to optimize this solution, right? So optimization can come through a segment tree or a Fenwick tree, right? Both are different data structures. We can either go with the segment tree, like we have seen the range minimum query. This is a range sum query problem, and we can also use a Fenwick tree, right? Now some of you might ask, when we have a segment tree, then why do we need a Fenwick tree, right? So the motivation comes from Fenwick tree is that it is very easy to code, right? You just need few lines of code, right, to build a Fenwick tree. And second thing is it takes less memory, right? In segment tree, you know, you need 3n or the 4n memory, but in Fenwick tree you will just need almost memory proportional to n, right? It will take
just n memory, and segment tree just takes 4n memory, right? So it is easy to code, and it is very fast to write that code, right? Short code, fast to write the code. So suppose you are giving an online computation in which you just have few minutes left, you do not have the time to code a segment tree, you can quickly build a Fenwick tree, right? But remember, you cannot solve all segment tree questions with a Fenwick tree, right? We can just solve some specific problems, some specific type of problems using Fenwick tree, but all segment tree questions cannot be solved using Fenwick tree. Using Fenwick tree or the BIT, right? Binary index tree, it is the same thing, right? So this is about the motivation, right? The next thing in this tutorial I'm going to cover is the prerequisites. If we are going to build a Fenwick tree, what all knowledge we should know, right? So there are few bitmasking concepts which we will revise, and we will look into this tutorial, right? So the first thing is, suppose you are given a number, right? Let's say you have a number like this. The number is, let's say, 6, which in binary can be represented as like this, right? Right. So this is the binary representation of 6, and now our problem is to find out the rightmost set bit. Problem is to find the rightmost set bit in 6. Set bit, let's say in any number n. Now if you see that any number will be of this form, there will be some collections of zeros and ones, right? And suppose I want to find out the rightmost set bit, which is this, right? So this number can be represented in this form, right? Let us say this number can be represented as like this. Suppose this part is a, right? And this is the set bit, which is 1, and all this part which is having zeros. So I'm representing this number like this, right? So a denotes the part which is before the rightmost set bit, b denotes all zeros, so b is basically all zeros, right? And a is the part before the rightmost set bit, all right? So I want to figure out, I want to find out this part, right? So basically what I want is, I want to remove this bit from the original number. This we will need in the Fenwick tree, so that's why we are studying this part, right? So suppose you have a number like this, again let's take the example of 6 only, and this is the rightmost set bit. So we can write it as like this: a10, where a is 0 1, b is 0, right? And let me do one operation on it. So let us try something on it, right? So let us find out the value of minus n, right? So minus n, or the n complement, right? So minus n kya hoga? Minus n is nothing but n complement plus 1, right? So what is going to be the n complement? It is going to be a complement, the negation of a, the negation of 1 is going to be 0, and negation of 0, basically negation of b, is going to be all ones, right? So this complement of b is going to be all ones, right? So this number is of this form right now. You have a complement, you have zeros, and you are going to have all ones, right? And you know that minus n is nothing but complement of n plus 1. So if you add 1 to this number, so this will give you 1 plus 1 is 0, 1 carry, 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 and finally you will get 0 and 1 carry, right?
and this a bar will remain as it is, right? So you can clearly see that this number reduces to this. So this number reduces to a bar followed by 1 followed by all zeros, which is again b, right? This is what you get. Now let us talk about this value n and minus of n, right? So let us see what is this value. So we know that it was a1 followed by b, which is all zeros, then it is a bar 1 and b, right? So this number is n and this is minus n, and I am doing a bitwise add. So b and b will be all zeros, right? So again it is going to be b, 1 and 1 is going to be 1, a and a bar are going to be zeros, right? Suppose if a was 0 1 0 1, so a bar would be 1 0 0 1. So and of these two numbers is always going to be 0, right? So we are going to get zeros all over here, right? So basically we get a mask in which we have the rightmost set bit and all other bits are zeros, right? So we get a mask which has a rightmost set bit and all other bits are zeros, right? So let us see for the example of 6. So what is 6? 6 is 1 1 0, right? What is minus 6? It is nothing but complement of this plus 1, right? So 1 plus 1 is 0, 1 carry and 0. So we get this number, right? And suppose now I do an operation n equals to n minus n and minus n, right? So what will happen? So this number suppose is 6, so minus this number, which is 0 1 0, right? So this will remove the last set bit, right? So what will happen is we are just subtracting the rightmost set bit and every time, right? So this number will be this. So 6 is now reduced to number 4, right? The same goes with 7, right? So if the 7 is 1 1 1 and I do n equal to n minus n and minus n, right? So 7 will be converted to this number 1 1 0 because we removed the last set bit. Then it will be converted to 1 0 0 because we now remove the second last set bit, and then it will be converted to number 0, right? So this is a very useful operation that we will need in the Fenwick tree, right? So this is very important thing, right, to understand this stuff. So I hope this is quite clear to you, and why we are doing this you will come to know very soon, right? So this was the prerequisite bit masking things which you should know, right? And the third thing we are going to talk about is the structure of the Fenwick tree. Alright, so we will cover the structure now. Structure of Fenwick tree. So suppose I have a array, and right, these are the elements of the array and these have some indexes, right? So 1 2 3 4 5 6 7 and so on, right? So these are the indexes. This is my original array A, right? So like segment tree, we are going to build a BIT array, right? So in segment tree we build a tree array. Here also segment tree BIT is stored in the form of array. Let's say this is a BIT array, binary index tree array. Again the numbering is going from 1 to n, right? Now the important thing is what each node in BIT stores, right? So what is stored by every node in BIT? This is what we want to figure out, right? So basically what does
BIT ऑफ I रिप्रेजेंट, क्या वैल्यू हम इस एरे के अंदर रखेंगे, राइट। सेगमेंट ट्री में वी नो दैट दिस नोड स्टोर्स द आंसर फ्रॉम 0 to 5, दिस स्टोर्स फ्रॉम 0 to 2 and 0 to from 3 to 5 and so on, right. So this we know that segment tree node stores the answer of a particular range, but BIT I क्या store करेगा, this we will have to see, right. So this is very important and let us see what it stores. तो BIT I store करते हैं, basically it will store, if I am talking about the sum, right, so it will store the answer of the range starting from a index. There is a formula for it, so from L to R, right. So here the value of L is nothing but I minus 2 raised to the power R plus 1 and R is nothing but I, right. So both inclusive, right. तो इसका मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है. तो द लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स क्या होगा, राइट. So let us compute this value. Here R is the position of the rightmost set bit. Position of the rightmost set bit. Let us compute for BIT of 1. ठीक है, BIT of 1 क्या स्टोर करेगा. So the leftmost value will be 1 minus 2 raised to the power 0 plus 1, because 1 में जो आपका राइट मोस्ट सेट बिट है दैट इज एट 0th पोजिशन. तो BIT ऑफ I क्या स्टोर कर रहे हैं, दिस विल बी 1 minus 1 plus 1 एंड राइट मोस्ट पोजिशन इज I, राइट. सो BIT ऑफ I जो है वो स्टोर कर रहा है सिर्फ 1 से लेके 1 का आंसर, राइट. तो इट मीन्स 1 से लेके 1 तक का आंसर ये स्टोर कर रहा है, राइट. तो सपोज इफ एरे में द फर्स्ट एलिमेंट इज 5, तो BIT ऑफ 1 भी क्या स्टोर करेगा, 5. द आंसर ऑफ द रेंज फ्रॉम 1 to 1, राइट. BIT ऑफ 2 क्या स्टोर कर रहे हैं, इस पे देखते हैं. BIT of 2, so it is going to be 2 minus, now the value of I in this formula is 2, right. So 2 minus 2 raised to the power 1 plus 1, so it is going to be, because 2 में जो राइट मोस्ट सेट बिट है उसकी पोजीशन 1 है, दैट्स वाई R is 1, so it is going to be plus 1, right. तो 1 से लेके एंड द राइट मोस्ट पोजिशन इज ऑलवेज I, तो 1 से लेके I तक मतलब 2 तक. तो BIT ऑफ 2 आपको स्टोर करेगा 1 से लेके 2 तक का आंसर. इट मीन्स अगर ओरिजिनल एरे में एलिमेंट्स है 5 और 3, तो 2 पे स्टोर होगा सम इसका 8, ठीक है. BIT 3 क्या स्टोर करेगा, लेट अस टॉक अबाउट BIT 3. तो इट इज गोइंग टू बी I minus 2 की पावर R plus 1. सो क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है तो R हमेशा जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, राइट, उनमें राइट मोस्ट सेट बिट हमेशा लास्ट पोजीशन पे होगा, मतलब R हमेशा 0 होगा. तो इन ऑड नंबर्स ये जो फॉर्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा 2 की पावर 0 plus 1 सभी ऑड नंबर्स में, राइट. तो विच इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ, राइट. सो ये आपका 3 ही आ जाएगा. सो 3 आपका स्टोर कर रहा है सिर्फ 3 से लेके 3 तक का आंसर, राइट. तो और अगर ओरिजिनल एरे में 7 पड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा. लेट्स टॉक अबाउट BIT ऑफ 4. So this is one observation. So the answer is I to I for all odd numbers, for all odd indexes. BIT of 4. So 4 हम ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, राइट. R कितना हमारा 2 है, so it is going to be 4 minus 2 raised to the power 2 plus 1, right. And this is again लेफ्ट इंडेक्स इज 1 एंड द राइट इंडेक्स इज 4. तो BIT ऑफ 4 भी क्या स्टोर कर रहा है, 1 से लेके 4 तक का आंसर, बेसिकली सबका सम. सो लेट से अगर यहाँ पे एलिमेंट 1 पड़ा है तो इन सब का सम क्या होगा,
7 + 8 15, 5 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा 21. सो ये स्टोर कर रहा है आपका 1 से लेके 4 तक का, राइट. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. तो जितने भी नंबर्स जो 2 की पावर्स में होंगे, राइट, उनके लिए जो आंसर आएगा वो यही आएगा. ऑल नंबर्स जो 2 की पावर्स में होंगे, बिकॉज उन वो कुछ इस तरह से होंगे, राइट. सो 1 - 2 I - 2 की पावर r क्या होगा? It is going to be 0 because I is always equal to 2 raised to the power r, right. So in all numbers which are powers of 2, so another observation we are going to write, जितने भी नंबर पावर्स ऑफ 2 होंगे उनका जो आंसर होगा दैट इज इन द रेंज 1 to i, राइट. तो हम लिख सकते हैं 4 का जो आंसर है वो 1 से लेके i तक का, राइट. तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, इसका कहने का मतलब बस यही है कि यहाँ पे हमारा एरे 1 पड़ा है, यहाँ पे हमारा एरे 1 प्लस एरे 2 पड़ा है, राइट. यहाँ पे हमारा एरे 3 पड़ा है, यहाँ पे हमारा एरे 1 से लेके 4 का सबका सम पड़ा है, अगर हम क्यूमुलेटिव सम की बात कर रहे हैं, ये पड़े, राइट. सिमिलरली एरे 5 के लिए वी नो इट इज़ एन ऑड नंबर, सो आंसर इज गोइंग टू बी 5 to 5. एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा होगा विच इज एरे ऑफ 5, तो ये एरे ऑफ 5 होगा. 6 के लिए अगर हम बात करें, 6 के लिए निकाल के देखते हैं व्हाट डज BIT ऑफ 6 रिप्रेजेंट, राइट. तो BIT ऑफ 5 हमें पता है 5 से लेके 5 तक होगा. BIT ऑफ 6 क्या होगा देखते हैं. तो इट इज गोइंग टू बी 6 - 2 raised to the power r plus 1. r देख लेते हैं, 6 is 1 1 0, right. So this position is 1, so it is going to be 6 - 2 plus 1, so it is going to be 5. तो 6 का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स आ रहा है 5 एंड राइट मोस्ट इंडेक्स है सेम, राइट. सो 6 का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 5 to 6. 7 के लिए भी नो इट इज गोइंग टू बी ओनली 7, राइट. सो यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स हो, राइट, तो यहाँ पे एरे 5 प्लस हम एरे 6 को स्टोर करेंगे एंड एरे 7 पे हम सिर्फ एरे 7 को स्टोर करेंगे, राइट. मतलब BIT ऑफ 7 पे हम सिर्फ एरे 7 को ही स्टोर करेंगे. तो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ BIT, राइट. मतलब कंस्ट्रक्ट की बात नहीं हो रही, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ BIT व्हाट इट स्टोर्स, राइट. तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम BIT में क्या स्टोर कर रहे हैं, राइट. हम क्यूमुलेटिव सम स्टोर कर रहे हैं, बट कौन सी नोड किस रेंज का सम स्टोर करेगी वो हमें इस फॉर्मूला से पता चलेगा, राइट. सो हर एक नोड के लिए कुछ डिफरेंट रेंज है एंड वो नोड उसके लिए सम स्टोर कर रही है, राइट. तो ये आपका फॉर्मूला है, राइट. सो in the next tutorial I will discuss the second part and how to implement and how to do a query, right. So how to write the update query and how to update the BIT, right. So I will see you in the next tutorial. Hi, so we are now going to talk about how to build the BIT, right, and how to update a particular location in the array or in the BIT. And the third thing is how we can do the query, right. So we are going to query and we are also going to update, right. So update basically means that at ith index I want to add an increment of this, right. Suppose initially the value at the third index is 5 and I want to make it 15, so I will just give a increment of 10, right. So that is the meaning of update operation. And query basically means you want to find out the sum of elements from a given index L to a given index R, both are inclusive, right. So this is the sum query. And build, you know, right. So initially you have an array and you want to build the BIT array from the original array, right. So basically build function can be made using the update function only, right. So you can assume that initially all the elements of the array are 0 and you are basically updating this index by, suppose the actual array is 3 1 2 5 4, right. So you are basically updating
this index by a 3, right? So you can say update index 1 and give it an increment of 3, right? Update index 2 and give it an increment of 1, right? So this is how you can build the BIT, right? But for that we must know how to write the update function. So the first thing I'm going to discuss is the update function, but before that let's give a quick review of what we have done so far, right? So we know that at every node BIT of I stores the answer to the range this I minus 2 raised to the power r plus 1 till I, right? This we have computed. For 1 it is 1, for 2 it is 1 to 2, for 3 it is 3, for 4 it is 1 to 4, for 5 it is 5, for 6 it is 5 to 6, right? The same can be seen from this diagram, right? So 1 stores the answer from the range 1, 2 stores the answer from 1 to 2. Since 3 is odd, it stores only one answer, and since 4 is a power of 2, it stores the answer from 1 to 4, right? We are not talking about the 0th index, right? 5 is odd, only this. Again for 6 we know the answer from index 5 till index 6, right? So this is how you can visualize stuff, right? For 7 it is only this, and since 8 is a power of 2, the answer is from 1 to 8, right? So 1 to 8 it is 7, it is 5 to 6, it is again 5, it is 1 to 4, it is only 3, it is 1 to 2, and it is only 1, right? So for odd numbers it is only that index. For other numbers we can use the formula, right? We can use this formula, right? This formula we have already used. Now let us talk about the update function, right? So suppose you have an original array like this, and you already have some numbers at every place, right? Suppose you want to update the 5th index or the, let's say, 3rd index, right? And suppose the original value is x, and now the new value you are putting up is, let's say, x plus 10, right? So you are basically giving an increment of 10, right? This is the meaning of an update, right? So you are going to have an update function which gets this BIT array, right? And you get the BIT, you get the index, and you also get the increment, right? Now what will happen, right? So basically, if you add 3 to this position, right? So if you add 10 to this position, all the other positions should have an extra 10 in them, right? But we are not going to update all the positions, right? So if you update all the positions, again it is going to take O of n time. So we are going to use BIT, right? So we are going to update those positions which contain the answer to this range, right? So let us see which are those positions. So 3, right? So 3 comes in this position, right? So if you increment of plus 10 here, so 3 is in this range. If you are going to do plus 10, so this value is going to be updated. 3 also lies in 1 to 4, so this is also going to be updated, because this position is nothing but a1 plus a2 plus a3 plus a4, right? So if you are going to make a3 equal to a3 plus 10, so this position is going to be updated, right? And again you are going to update this position as well, so you are going to add plus 10 here. So these are the positions you are going to update, right? So from 3 you go to 4, and from 4 you go to 8, right? So you have to move in a forward direction, right? Now let us see how these values come. Right? So from 3 you go to 4, and from 4 you go to 8, and this you will do till the maximum index, till n, right? तो मैक्सिमम इंडेक्स तक जो भी हमारा ऐसा नंबर होगा, राइट? सो हेयर यू कैन सी यू टुक अ जंप ऑफ 1, यहाँ पे आपने सिर्फ 1 का जंप लिया 3 से 4 पे जाने पे, एंड यहाँ से आपने 4 का जंप लिया,
एंड मे बी कुछ जंप यहाँ से आपने लिया होगा, राइट. सो 3 का बाइनरी लिखते हैं. सो 3 इज 0 1 1, 4 इज 1 0 0, 8 इज अगेन 1 0 0, राइट. एंड आगे कुछ भी होगा, राइट. या फिर एक एग्जांपल हम और देखते हैं. लेटेस्ट से हमने सेकंड इंडेक्स पे कुछ y ऐड कर दिया, राइट. सेकंड इंडेक्स को हमने अपडेट किया, राइट. तो सेकंड इंडेक्स पे अपडेट कहाँ कहाँ चेंज होगा, राइट. तो सेकंड इंडेक्स की वजह से हमारा अपडेट यहाँ होगा +y, और सेकंड इंडेक्स इसमें लाई कर रहा है, इसमें अपडेट होगा +y, और सेकंड इंडेक्स इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो इसमें भी अपडेट होगा +y. तो 2 से आप 4 पे गए, 4 से आप सीधा 8 पे गए, राइट. सो जो भी सेकंड इंडेक्स में हमने चेंज किया है वो फोर्थ इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो 8th इंडेक्स में भी होगा, टिल द मैक्सिमम जो भी पॉसिबल इंडेक्स होगा एरे के अंदर, वहाँ तक वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. लेट्स से इट इज लेस देन इक्वल टू n, राइट. नॉट एग्जैक्टली n बट सम इंडेक्स लेस देन इक्वल टू n, राइट. तो 2 का बाइनरी लिखते हैं. तो 2 इज नथिंग बट 1 0, 4 इज नथिंग बट 1 0 0, 8 इज नथिंग बट 1 0 0 एंड सो ऑन, राइट. द थिंग गोज ऑन, राइट. सो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, दिस इज नथिंग बट, अगर ये इंडेक्स i है, राइट, अगर आप ith इंडेक्स अपडेट करना चाह रहे हो तो द नेक्स्ट इंडेक्स जहाँ पे अपडेट एक्चुअल में होगा दैट इज गोइंग टू बी i प्लस इक्वल टू i एंड माइनस i, राइट. ये अभी हमने देखा था, राइट. तो i एंड माइनस i क्या होता है देखते हैं. i एंड माइनस i हम देख चुके हैं, राइट. सो लेट अस सी व्हाट दिस टर्न्स आउट टू बी, राइट. तो 3 के लिए हमें पता है बाइनरी इज 0 1 1, राइट. एंड i एंड माइनस i क्या होगा 3 एंड माइनस 3. तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेट बिट, so it is going to be 0 0 1, right. And अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, so this becomes 1 and 1 1 0, 1 and 1 1 0 and 1 and 1 1 0. So you can see this number becomes 4, right. 4 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 8 पे जा रहे हैं. तो अगेन करते हैं. So this now becomes 4. तो 4 and minus 4 is nothing but the last 8 bit, which is only this number, right. So 4 plus 4, it is going to be 8, we know. So this takes me to the 8, ठीक है. तो इसके लिए भी वेरीफाई करते हैं. लेट अस डू फॉर दिस एग्जांपल. So for 2, right, so 2 is 1 0, 2 and minus 2 is nothing but again this number. तो add हम कर रहे हैं तो this becomes 4, and 4 and minus 4 we know it is this number, and add हम अगर कर रहे हैं तो this becomes 8, right. तो 1 0 0, right. So you can clearly see कि किसी भी एक इंडेक्स को हम चेंज कर रहे हैं, उससे जो भी चेंजेस अफेक्ट हो रहे हैं वो हमें इससे मिल रहे हैं, i एंड माइनस i से, राइट. i में इतने का जंप ऐड कर दो तुम, यू विल रीच द न्यू इंडेक्स, राइट. सो i प्लस ये कर दो, सो यू विल रीच द न्यू इंडेक्स, राइट. तो अपडेट अगर मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स i को करना है तो मेरे को पता है कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जिनको मेरे को एक्चुअल में अपडेट करना है. उस पर जाते हैं हम. तो लेट अस सी हाउ दिस थिंग कैन बी रिटन इन द कोड, राइट. So you can say while this I is less than equal to the maximum n, जो भी आपका मैक्सिमम n है उससे छोटा या इक्वल, ठीक है. और आप क्या करोगे, bit ऑफ i में जो भी आपके पास इंक्रीमेंट आ रहा है उसको पुश कर दोगे, राइट. तो bit ऑफ i प्लस इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, एंड अपने i को अपडेट कर दोगे, i इक्वल्स टू i प्लस i एंड माइनस i. दैट्स इट. बस इतना सही कोड है, राइट. दैट्स हाउ यू कैन राइट द अपडेट फंक्शन, राइट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बिल्ड फंक्शन, आई वांट टू बिल्ड माय बीआईटी, राइट. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको एरे गिवन है और उसका साइज गिवन है, राइट. एंड एज्यूम कर लेते हैं कि एरे का जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो आपको हर एक इंडेक्स के लिए फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, आपको क्या करना है, जो भी आपका बी आई टी एरे है, यहाँ पे एक बी आई टी एरे भी ले लेते हैं, आपको अपडेट करना है बी आई टी एरे को, जिसके ith इंडेक्स पे हमें क्या रखना है, एरे ऑफ i. दैट्स इट, राइट.
एंड इनिशियली जो आपका BIT एरे है वो सारा जीरोज है, जैसे BIT ऑफ 100 हमने लिया हुआ है और वो जीरोज है, राइट। तो क्या होगा, जो भी आपके एरे के एलिमेंट्स है वो BIT में इंसर्ट हो जाएंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जहां जहां पे अपडेट्स होने हैं वहां वहां पे हो जाएंगे, राइट। ठीक है, सो अब देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, राइट। सो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगे ना, ये भी जो भी नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगे, राइट, तो दीज आइट्रेशंस आर गोइंग टू बी log n, बिकॉज हर एक नंबर में जो लास्ट सेट मोस्ट बिट होता है ना, दैट इज एट द log n पोजीशन, राइट। उसकी जो पोजीशन होती है वो log n होती है, राइट। तो आपको यहाँ पे भी लग रहा होगा 2 से हम 4 पे गए, 4 से 8 पे गए, इट इज इंक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 2, राइट। सो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इट टेक्स टू अपडेट 1 बिट इज O ऑफ log n, राइट। तो आपकी जो अपडेट की कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज O ऑफ log n, एंड जो आपकी बिल्ड करने की दैट इज O ऑफ n log n, बिकॉज हमने n टाइम्स अपडेट कॉल किया है, राइट। सो दिस इज O ऑफ log n, and this part is going to be O of n log n. So n log n में आप बिल्ड कर सकते हो बहुत ही कम कोड लिख के, एंड log n में आप अपडेट भी कर सकते हो, उसके बाद भी जब मर्जी आप अपडेट करना चाहो कर सकते हो, राइट। So in the next part we will see how we can write the query, right. So thanks for watching, I will see you in the next part. Now we are going to talk about how to query a BIT, right. हमने एक BIT कंस्ट्रक्ट कर लिया है, अपडेट्स हमने कर लिए हैं, एंड अभी टाइम है कि हमें क्वेरी करना है, राइट। तो क्वेरी करने का मतलब क्या है, अभी हम बिल्कुल सिंपल क्वेरी की बात कर रहे हैं कि लेट्स से क्वेरी आई का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्वेरी आई मीन्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to I, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to from index I to till index I, from 1 to I, right. So this is what a query I means, right. तो क्वेरी ऐसे भी आ सकती है L2R हमें चाहिए, तो उस केस में हमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, क्वेरी करना है। अगर उसने बोला कि मेरे को आंसर चाहिए 4 से लेकर 7 तक का, राइट, तो आप क्या करो, 7 तक का सम आपको पता है, आपको 4 तक का सम भी पता है, तो क्वेरी ऑफ ये कर लो आप, क्वेरी ऑफ R माइनस क्वेरी ऑफ L माइनस 1, अगर 4 इंक्लूसिव है, राइट, ये आप कर सकते हो, राइट। तो क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इस रेंज का जो सम होगा 4 to 7 का, राइट, 7 यहाँ पे, राइट, इसका जो सम होगा वो कुछ नहीं होगा 7 तक के एलिमेंट्स का सम माइनस वो सम जो 3 तक का है, राइट। 3 तक के एलिमेंट्स उसमें से हटा दो, तो अब 3 तक का सम अलग से निकाल लो, 7 तक का अलग से निकाल लो, एंड दैट्स इट, दोनों का डिफरेंस ही तो आपका सम होगा, राइट। सो अभी हम इस क्वेरी की बात कर रहे हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो BIT में हमें पता है कि जो 7th नोड है वो क्या स्टोर कर रही है, 7th नोड सिर्फ 7 का आंसर स्टोर कर रही है, राइट। तो अगर आपको 1 से लेकर 7 तक का सम चाहिए तो आपको कुछ नोड्स आपको कंबाइन करनी पड़ेंगी, राइट। कौन कौन सी नोड्स कंबाइन करनी होंगी देखते हैं। यहाँ पर 2 है, तो दिस एलिमेंट इज 2, एंड 7 के लिए आपको देखो 7 चाहिए होगा, 5 से 6 चाहिए होगा, एंड 1 से लेके 4 चाहिए होगा, राइट। बिकॉज अगर आपके पास 1 से लेके 4 तक का सम आ गया, ठीक है, 5 से 6 तक का सम आ गया और 7 तक का सम आ गया, तो आपका काम हो गया ना आपका काम, क्योंकि 1 से 4 में क्या पड़ा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। 5 से 6 में क्या पड़ा है, आपके पास पड़ा A5 प्लस A6, एंड 7 में क्या पड़ा है, A7, राइट। तो यही तो हमें चाहिए 1 से लेकर 7 तक का सम, इन सबको सम करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 7th इंडेक्स से एक पिछले इंडेक्स पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, हम 6th इंडेक्स पे जा रहे हैं, 6th इंडेक्स से हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम 4th इंडेक्स पे जा रहे हैं, एंड 4th इंडेक्स से हम कहाँ पे जा रहे हैं, बस खत्म, 0th इंडेक्स पे बोल सकते हैं, और 0th इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ है, राइट। तो 7 का जो बाइनरी है वो 1 1 1 है, 6 है आपका 1 1 0, 4 है आपका 1 0 0, एंड ये है आपका 0 0 0, राइट। तो आप देख सकते हो जो हम आइट्रेट कर रहे हैं, हम हर आइट्रेशन में लास्ट सेट बिट हटा रहे हैं, इसको हमने हटा दिया, राइट।
तो हम 6 पे आ गए, इसको हमने हटा दिया तो हम 4 पे आ गए, इसको हमने हटा दिया तो हम 0 पे आ गए, राइट। तो लॉजिक बहुत ही फिर क्लियर है। तो बेसिकली हम i में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विच इज़ नथिंग बट i एंड माइनस i, राइट। तो 7 के लिए करके देख लेते हैं। 7 इज 111 एंड 7 एंड माइनस 7 क्या होगा, इट विल बी गोइंग टू बी 001, राइट। एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट बिकम्स 110, राइट। तो 6 के लिए ये होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट बिकम्स 100, एंड 4 के लिए यही होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट बिकम्स 000। तो हमें बस ये काम करना है, राइट। तो बेसिकली अगर कोई कहता है कि आपको क्वेरी करना है इस इंडेक्स पे, ith इंडेक्स तक का आपको टोटल सम चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट while i is greater than 0 नॉट इक्वल टू, जब तक i 0 पे नहीं पहुंच जाता तब तक हम अपना while लूप लेंगे। और लेट से यहाँ पे हमारा जो इनिशियल सम है वो 0 है, ठीक है। सम में क्या ऐड करेंगे, जो बी आई टी आई में पड़ा है, सम प्लस इक्वल टू बी आई टी ऑफ आई, एंड आई को छोटा कैसे करेंगे, आई इक्वल टू आई माइनस आई एंड माइनस आई, दैट्स इट। बस इतना ही काम करना है, राइट। तो इससे आपका क्वेरी फंक्शन भी बन जाएगा, ठीक है। तो अराउंड हमने 10 लाइंस में क्वेरी भी बना लिया और हमने अपडेट फंक्शन भी लिख लिया, राइट। So thanks for watching. And the next part I will show you the actual code and the program, right? Hi friends, in this tutorial I'm going to discuss the BIT implementation for a problem called range sum query, right? So we have already discussed how BIT works, and now we are going to write the code for the BIT, right? So in this code I have taken an array, right, which is the actual input array, and I have taken a BIT array which is initialized to 0, right. And in the main I am taking input the number of elements and the elements of the array, right. And what I have done is I have made the indexing from the 1, right. So remember, in BIT we always do the indexing from 1, right. So the first task is to build the BIT, right. So I am going to build the BIT using the update function, right. So if we have taken an input array I, then we can say that the ith index will get an increment of ai, right, because initially the value is 0 and now the value is ai, and the third thing is the number of elements we want to send. So let us write the update function. So we have clearly seen that if we update a particular index I, right, in the BIT, right. So if we update the index I, then we move in this direction till index less than equal to n, and in every jump we do I equals to I plus I and minus I, right. This is what we do, right. So if I say that I want to insert 3 here or plus 3 here, then I will do plus 3 here, I will do plus 3 here, and so on, right. So this we have already seen. So I can say while I is less than equal to n, BIT of I will face an increment of this, and I will be now I equal to I plus equals to I and minus I. So this is what we are going to do. So this is a very simple update function. Now let us write the query function, right. So for query we have already seen that if I want to query for an index 6, right. So let's say I'm querying for 6 index. So this stores the answer for 5 and 6, and the 4th index stores the answer from 1 to 4, right. So if I want to find out the sum till the 6th index, so it will be nothing but BIT of 4 plus BIT of 6, because this index stores the answer for A1 plus A2 plus A3 plus A4, and this index stores the answer for A5 and A6. That's it. This is how we can get the sum, right. And if I want the sum from 4 to 6, then we can simply say that the answer is nothing but query of 6 minus query of this part minus query of 3. So you will get the answer for this part. So ith index denotes the sum till I, right. So this is a sum till the ith index. So we are going to do the query.
So let us say our answer is 0, and while this index I is greater than equal to 0, right? What we do answer plus equals to bit of I, and I equals to I minus equals to, because we are going in the reverse direction, I and minus I. So this is what we are going to do, and finally we are going to return our answer. So this is the query part. So query, let's see once again. So I want to figure out the answer for 6, which stores 5 and 6. The fourth index stores the answer from 1 to 4. From 6, which is this, I go to index 4, right? So 4 is nothing but we remove the last rightmost bit, and from 4 we go to 0 and our loop stops. So we add the answer at this position and we add the answer at this position, right? So since there are only the log n bits, so we can say query works in log of n time. Similarly, the update works in log of n time. So let's now write some code for query. So let us say we have some q number of queries which we will take input, and while the number of queries are there, we are going to input two values, L and R, starting and the ending point of the query, right? So we take input these two values and then we write cout query of R minus query of L minus 1. So this will give you the answer for every query. Now let us try to run our code on a sample input. Let us say there are 5 integers and these are nothing but 2, 3, 1, 4, 7 or 6, and let's say there are 3 queries. The first query is from 1 to 2, then 2 to 4, and then let's say we have a query from 5 to 5, right? Let's run our code. So this should be I greater than 0. Alright, so we can clearly see the answer for this part as for 1 to 2, right? So these two elements, the answer is 5. Alright, from 2 to 4, so for this part the answer is 8, which is fine, and for 5 to 5, which is this element, the answer is 7. So our BIT is working perfectly fine. So I hope you like this tutorial. Thanks for watching and stay tuned. Hi friends, we are talking about a range maximum query using BIT, right? So you have already solved range minimum query using segment tree. In this problem we are going to do range maximum query and using BIT, right? So in this problem the question is you just need to find out the maximum element in a range, right? So this is slightly different because you can have range starting from 1 till a particular index I, because right, BIT of I stores the maximum element till I, right? So if the elements are like this 1, 3, 5, 7, 2, right, and you want to find out the maximum element till this index, it is 5, the maximum element till this index, it is 7, right? So this is what you have to do, and there will be updates as well, right? So there will be update that you want to change index I, right? You want to make array of I as 15. In that case you have to propagate 15 in the forward direction, right? So BIT of I will store the maximum element till I. So it stores the maximum element till I, right? So remember, you can use BIT only to do prefix type of queries, right? Prefix type of queries. If you want to find out the maximum element in this range L to R, suppose in this range you want to find out, but you cannot
do this. Why? Because you cannot find out the maximum element by finding the maximum till this index. Let's say this index is I. Removing the maximum element till this index, let's say this index is j. You cannot do this like we did in the range sum query. So using BIT, doing this maximum in this range L to R is not possible. The only thing I can do is I can find out maximum or the minimum element in the range 1 to I, because I know that BIT of I stores the cumulative answer till the index I, right? So that's the only difference. Now let us try to go through the code, right? So suppose if you update this element, right? So 1 2 3 4 5, right? So if you update 3, then you have to update all the indices which include 3 in the range, right? So we have seen in the previous examples how this is being done, right? So we know that the next index is going to be 3 plus 3 and minus 3, right? Then again we know that, let's say this is nothing but 3 is 1 1 0 and minus 3 is 0 1 0, and if we do the AND, we go to the fourth index, right? The next index is going to be 8th, right? So we are going to update at the fourth index BIT of 4 that the maximum element is now changed, right? And similarly we will change in the forward direction, right? And in the query part we have to check, right? Suppose we are checking for what is the maximum element till index 7, right? So BIT of 7 can be written as this index 7, then index 6 to 7, and then the minimum in the range, then 5, and then 1 to 4, right? So this is nothing but BIT of 7, this is nothing but BIT of 6, this is nothing but BIT of, sorry, this is going to be 5 to 6, right? And this is going to be 1 to 4, right? So this is going to be BIT of 5 and this is going to be BIT of 4. Remember, we know how to move backward. So from 7 we go to the index 5, and from here we go to index 4, and from here we go to the index 0, right? So this stores the minimum of the range 1 to 4, this stores the maximum or the minimum of the range 5 to 6, this stores the maximum of the range 7. So by combining, by taking the maximum of all these, we can find out what is the maximum element in the range 1 to 7, right? So this is quite easy. So now let us see it in the implementation, right? So this is the code we had done for the range sum query. Now I have to do for the range maximum query, right? So in the update function, instead of getting the increment, I get the value, and this is how we were updating. So BIT of I is going to be nothing but max of the old value, BIT of I, and the new value, right? And in the query part, again we have to write answer is going to be maximum of the old answer and the current answer, which is BIT of I. That's it, just a change of 2 lines, right? And here in the input we have to write that we will get an index, right? We will get that index and we will find print the maximum element till that position, right? So cout query of index. So let us give, let's say, the 5 elements, and these elements are 5 4 1 2 3, and let's say 3 queries, index till 3, index till 4, and let's say this element is 7 and index till 5. So you can see till the third index the maximum element is 7,
right? Till the fourth index, the maximum element is, till this is, it is 5, yes. Till the fourth index, it is 7, and till the fifth index, it is also 7. So this is how the range maximum query works. You can also do some update, right? You can say that update the third index to 10, right? This will make 1 as 10, right? In that case, you will get all answers as 10. Sorry, I also need to give the value of n, right? So now you can see all the answers are 10, and till the second position, it should be 5, right? So clearly we can see the update and the query functions are working very well, right? So I hope this is also clear to you. So thank you for watching. I will see you in the next tutorial. Hi friends, in this tutorial we are talking about an interesting problem from Spoj. The name of the problem is inversion count. So in this problem you are given an array. You might have solved this problem using other methods as well. So let us say you have an array something like this: 5, 2, 1, 4, 3, and that's it, right? So this is the array, and you have to count the number of inversions in this array. Count number of inversions. And what is the meaning of an inversion? So all such pairs such that I is less than j but ai is greater than aj. Number of pairs which satisfy this property. So you can say that 4 and 3 form one inversion, and 5 and 1 also form one inversion, 5 and 4, 5 and 3, and so on, right? So you have to count all such pairs having index I less than index j but value at index I is greater than the value at index j, right? So the very first approach that comes to the mind is the brute force approach, right? Which can solve this problem in O of n square time. You can use two nested loops, right? We have also seen this problem using a modified merge sort, right? Modified merge sort. So we have seen that this gets solved in O of n log n time, right? So I'm not going to discuss about this approach as we have already covered it, and we are going to talk about using BIT. You can also use Fenwick tree, which again solves it in O of n log n. So we will see how this problem can be approached using BIT. So let me talk first about the brute force approach. So in the brute force approach, what we do, suppose you have this array, and let me write the code for the brute force approach first. 5, 2, 1, 4, 3. So can we write it something like this? For I equal to n till I is greater than equal to 1, and I'm assuming that the array is based from index 1, right? So let us say this is index 1, 2, 3, 4, and 5. And in the inner loop, I can say that for j equal to I plus 1, j is less than equal to n, j plus plus, and if I find this, if array of j is less than array of I, then I will increase my inversion count. So answer plus plus, and let's say in the beginning the answer is 0, right? Now what happens is, what we are doing is, I'm traveling in this direction. I'm starting from the end and going towards the index 1, right? So at a particular index 1, I check how many elements which are lying after I are actually smaller, right?
if array of j, so array of j is here, so how many elements which are lying after I are smaller than this index? So then I do a count plus plus or answer plus plus, right? So this gives me the number of inversions, right? But this method takes O of n square, right? The idea here is to optimize this loop using BIT. So optimize this loop using BIT, or you can say you have to remove this loop, maybe, right? And this loop is doing nothing, but we are just scanning the array from right to left. Now let me tell you how this can be optimized. The idea is to maintain a BIT array. Let us discuss the BIT approach. So let us say you have an array like this. This is 5 2 1 4 3. Again index is 1 2 3 4 5, and here you have a BIT array. This is again having 1 2 3 4. Initially all the elements of BIT array are initialized to 0, and we are going to use something like the range sum query, right? Basically we are going to calculate cumulative frequency. Let me make one more array, right? This is actually not needed, but this array I'm going to make for understanding purpose only, right? So I'm just making this array for understanding purpose only. So this array is cumulative frequency, कितनी बार वो नंबर आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? एंड आई सी दैट अभी जो नंबर मेरे पास आ रहा है वो 3 है, राइट? एंड स्टार्टिंग में सारी फ्रिक्वेंसीज 0 है। तो क्या 3 हमारे पास ऑलरेडी आया है? नहीं आया है। तो व्हाट आई डू, आई इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 to 1। 3 आ चुका है, राइट? एंड 3 आ चुका है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ तक की क्या होगी, राइट? इट विल बी ऑल्सो 1, इट विल बी ऑल्सो 1 एंड इट विल बी ऑल्सो 1, राइट? ऐसे ही होगा, राइट? बिकॉज ये जो एरे है दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एरे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स स्टोर करेगा, ठीक है? तो सेम चीज़ हम BIT में कैसे कर सकते हैं? हम 0 को अपडेट करके क्या कर सकते हैं? 1, राइट? बेसिकली यू कैन, एक्चुअल क्वेरी में ऐसे होगा BIT ऑफ 3, मतलब हम अपडेट कॉल करेंगे विद इंडेक्स एज 3 एंड वैल्यू एज +1, कि थर्ड इंडेक्स पे +1 कर दो, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो 1 आगे प्रोपोगेट हो जाएगा BIT में, राइट? एंड वी नो दैट दिस अपडेट हैपन्स इन O of log n टाइम, ये हमें पता है। सो बेसिकली अपडेट कहाँ कर रहा हूँ? अपडेट कर रहा हूँ AI पे, और मैं कर रहा हूँ +1, राइट? इन्वर्जन्स कैसे काउंट होंगे? सो बेसिकली 3 के लिए इन्वर्जन्स कैसे निकलेंगे? हम देखेंगे 3 से आगे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं, राइट? सो अगर मेरे को क्वेरी करना है कि 3 कितनों के साथ इन्वर्जन बना रहा है, तो आई विल डू अ क्वेरी ऑन AI -1, मतलब मैं 2 पे क्वेरी करूँगा। तो 2 तक का आंसर क्या पड़ा है? 0। सो थर्ड, ये जो नंबर 3 है इसके साथ 0 इन्वर्जन्स बन रहे हैं, राइट? और उनके साथ मतलब जो नंबर्स 3 के बाद आ रहे हैं, राइट, उनके साथ इसके 0 इन्वर्जन्स बन रहे हैं। तो हमारा इन्वर्जन काउंट में क्या ऐड हो जाएगा? क्वेरी का आंसर। तो इन्वर्जन्स प्लस इक्वल टू दिस थिंग। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। हम सपोज करो 4 पे चले गए, हम 4 पे गए, ठीक है? और हमें पता लगाना है कि 4 के बाद ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 4 से छोटे हैं, राइट? सबसे पहले हमने 4 की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? 2, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 5 पे।
ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, टोटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। एंड सिमिलरली हमने अपडेट यहाँ पे मारा 1, राइट, 4 आ चुका है, ठीक है। एंड अब देखते हैं क्या होगा। तो हम क्वेरी करेंगे कि 4 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं। 4 से छोटे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3 पे, तो यहाँ तक पे कितने एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं 4 से छोटे एलिमेंट्स। तो मेरे को पता है सिर्फ एक ही एलिमेंट आया 3, तो 3 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 तक की टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 1, तो 4 के लिए आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1, राइट। सो 1 से छोटे एलिमेंट्स, तो 0 के लिए हम क्वेरी करेंगे तो 1 के लिए तो 0 ही है, 1 से छोटे एलिमेंट्स में कुछ नहीं है, राइट। अब हम क्वेरी करते हैं के लिए 2 के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम 1 मार्क कर देते हैं, और सिमिलरली हम यहाँ भी 1 मार्क कर देते हैं, जो कि यहाँ प्रोपोगेट हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर हमारा 4 हो जाएगा, राइट। तो इस पे तो मैं लीनियरली प्रोपोगेट कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में जो काम है वो BIT के ऊपर हो रहा है, BIT ट्री के ऊपर, ठीक है। सो अब मेरे पास आया 2, तो मेरे को देखना है 2 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये देख सकता हूँ, इस पर क्वेरी कर लूँ, राइट। तो 2 से छोटा सिर्फ 1 है जो ऑलरेडी आया हुआ है, राइट। तो एक ही एलिमेंट है, 2 के लिए इन्वर्जन्स कितने होंगे 1। एंड अब हमारे पास नंबर आया 5, तो 2 पे भी हम मार्क कर देते हैं 1, यहाँ मार्क कर देते हैं हम 1, एंड यहाँ पे हमारा एक्चुअली 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 पहले भी 1 था, अब 2 हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा 3, ये नंबर हो जाएगा 4, एंड ये नंबर हो जाएगा 5। तो अब हम देखेंगे 5 से छोटा नंबर क्या है 4, तो 4 तक 4 पे क्या पड़ा है, राइट, तो 4 पे पड़ा है 4, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 के लिए 4 इन्वर्जन है। क्वेरी किया हमने, राइट। तो क्वेरी हमारी अगेन लॉग एन में चलेगी BIT के ऊपर, क्योंकि सम कर रहे हैं ना हम, ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये काम सारा BIT के ऊपर हो रहा है, राइट। तो 5 के साथ 4 इन्वर्जन बन रहे हैं, कौन कौन से, 5 2, 5 1, 5 4 एंड 5 3, ठीक है। 2 के साथ एक इन्वर्जन है 2 1, 1 के साथ एक इन्वर्जन है कितना, 1 के साथ 0 है, सॉरी, और 4 के साथ 1 है, यस, 4 और 3, और 3 के साथ भी 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होंगे इन तीनों का सम होगा सबका, तो 6 इन्वर्जन हमारे पास आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिर्फ BIT बनाना है, और BIT कैसे बनाना है ये हम देख लेते हैं, राइट। सो BIT को अपडेट करने का लॉजिक तो हमारा सेम रहेगा, क्यूमुलेटिव सम का लॉजिक भी हमारा सेम रहेगा, डिफरेंस आएगा सिर्फ हमारा क्वेरी करने में, राइट, मतलब बिल्ड करते वक्त, राइट। सो हमें क्या करना है, फॉर i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, अपने जो एरे है उस पर पीछे से लेके यहाँ तक आइटरेट करना है, और जो भी नंबर आ रहा है x, तो हमें क्या करना है BIT ऑफ x पे कुछ काम कर देना है, राइट। तो देखते हैं, लेटेस्ट से हमारा स्टार्टिंग में जो आंसर है वो 0 है, और हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड करेंगे क्वेरी का आंसर। क्वेरी करना हमें ARR ऑफ i माइनस 1, कि x से छोटे कितने नंबर्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो x से छोटे नंबर्स हम चेक करेंगे, तो वो हमें क्वेरी फंक्शन ला के देगा, क्योंकि क्वेरी हमारा लॉग एन में चल रहा है। दूसरी चीज़ क्या करनी है हमें, कि क्योंकि अभी जो नंबर है वो कौन सा आया है, AI नंबर आया है, ठीक है, तो x आपका AI है, तो हमें अपडेट क्या करना है, एरे ऑफ i, और वैल्यू वहाँ पे क्या रखनी है हमें 1, कि यार ये नंबर आ चुका है। तो अपडेट में क्या होगा, ये जो 1 आया ये आगे प्रोपोगेट हो जाएगा, सब में ऐड हो जाएगा, राइट। तो अपडेट भी हमारा O ऑफ
log n में चलता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना कोड हमें लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी o ऑफ log n log n, बिकॉज हम n एलिमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, राइट। So let us try to write it in the code. So this was the basic PIT जो हमने cumulative sum query का बनाया था पहले भी, and अभी हम यहाँ पे एक array को read कर रहे हैं and we are trying to find inversions. So you can say that for int I equal to n till I is greater than equal to 1, हमने array को right to left scan किया है, and जब भी हमने एक नंबर मिला पहले हमने उससे छोटे नंबर्स काउंट कर लिए, क्वेरी कर लिया हमने ARR ऑफ i -1 पे कि उससे छोटे नंबर्स कितने हैं, ठीक है। एंड फिर हमने अपडेट कर दिया कि हाँ ARR ऑफ i हमारा, सॉरी इट इज़ a ऑफ i हमारा आ चुका है। हमने कर दिया अपडेट a ऑफ i पे हमने क्या रख दिया 1। फाइनली यू कैन से योर आंसर हैज़ बीन determined. So cout answer and endl, that's it. Now let us try to run our code. All right, so sum is, yeah, this should answer. And this function accepts the value of n as well, right? So in update should give n as well. And let us say you have 5 number of elements and these elements are nothing but 5 to 143. And let us run it. So you can see the number of inversions are 6. So you can see by writing just a few lines of code, right? बिकॉज ये पार्ट तो कॉमन है, इसमें तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। सिंपल क्वेरी फंक्शन जो हमने सम के लिए लिखा था, क्यूमुलेटिव सम क्वेरी 1 से लेके n तक का, एंड अपडेट फंक्शन हमने लिखा था वही है, राइट। तो बिल्कुल कुछ थोड़ा सा बस हमने ये कोड लिखा है और हमारा जो फेनविक ट्री है दैट इज़ नाउ गिविंग इन्वर्जन काउंट, राइट। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी बोल सकते हैं कि BIT में such problems are in the category which is called point query and range update, right? It's called point query. Why? Because we are changing only one element, and sorry, this is point update and range query. So point update and range query, हमने query एक range पे किया है और update हमने सिर्फ इस पे किया है। तो yeah, so this is called point update and range query. So similarly we can have range update point query, or we can also have range update and range query. So I hope this problem is clear to you and you will try to submit this problem on spot, right? And I will see you in the next tutorial. Hi friends, लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्जन काउंट प्रॉब्लम डिस्कस किया था, एंड उस प्रॉब्लम के अंदर हमने ऑल द सॉल्व कर लिया था, बट देयर आर फ्यू लिमिटेशंस इन द मेथड वी हैड टू डिस्कस. द फर्स्ट थिंग इज द मेथड विल फेल फॉर नेगेटिव नंबर्स, सो इट विल नॉट वर्क फॉर नेगेटिव नंबर्स. सेकेंड थिंग इज अगर नंबर्स की रेंज ज़्यादा है, राइट, so it will take more memory if the range of numbers is large. The range is large. तो सपोज करो आपके पास कुछ नंबर्स हैं ऐसे, राइट, इट्स 100, 99, 82, 1000, राइट. तो अगर आपको
इन्वर्जन्स काउंट करने हैं इसमें, तो आपको इसके लिए BIT एरे बनाना पड़ेगा, राइट। एंड क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर आ रहा है स्कैन करने पे वो 1000 आ रहा है, राइट। सो आपको BIT ऑफ 1000 अपडेट करना पड़ेगा, तो यहाँ +1 रखना पड़ेगा, राइट। एंड सिमिलरली बीच में कहीं पे 82 आ रहा है तो आपको BIT ऑफ 82, BIT ऑफ 97, BIT ऑफ 100 भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं ओवर अ रेंज, तो यू विल नीड अ लार्जर एरे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा लार्ज एरे की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास नंबर -82 है तो नेगेटिव इंडेक्स तो आपका एरे में हो ही नहीं सकता, राइट। सो दिस मेथड फेल। तो हाउ डू वी हैंडल इट? तो अब इसको कैसे हैंडल करें सच दैट इट वर्क्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ केसेस? तो इसको हैंडल करने का जो मेथड है, देयर इज़ अ ट्रिक विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्रेशन। So we are going to talk about coordinate compression. काफ़ी आसान है, आपको समझ भी आ जाएगा। तो we are going to talk about coordinate compression. तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक एरे कुछ ऐसा गिवन है, लेट्स से हमारे पास एक एरे है विच इज़ 100, 99, 82, 11 एंड 97। इसके अंदर मेरे को इन्वर्जन्स काउंट करनी है, तो इसके अंदर जो इन्वर्जन्स होंगी दैट विल बी सेम एज द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन दिस एरे, ठीक है। तो बेसिकली हम छोटा कर रहे हैं, हर एक कोऑर्डिनेट को छोटा कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको नंबर असाइन कर देते हैं 1, उससे बड़ा कौन है 82, इसको दे देते हैं 2, उससे बड़ा ये 3, उससे बड़ा 99, 4 एंड 5, राइट। तो ये दोनों एरेज हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है, राइट, बिकॉज हमने रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मेंटेन कर रखी है, राइट। इसको इसमें तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। सो इट इज़ रिड्यूस्ड टू द ओरिजिनल एरे, बेसिकली दिस इज द कॉम्प्रेस्ड एरे। तो इन ये वाला जो एरे है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर लार्ज नंबर्स हैं इट विल बी एबल टू हैंडल, हमेशा हैंडल कर पाएगा। And you can say that all values in this array will be less than equal to n, and BIT can be used on this compressed array. So all values will lie in this range, right? So now the point arises, how do I convert this array into this array? अगर ये काम हमने कर लिया फिर तो हमारा BIT का लॉजिक एज इट इज़ यूज हो जाएगा। तो मेजर चैलेंजेस कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो देयर कैन बी मैनी मेथड्स, राइट। सो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। So there are many ways to do coordinate compression. The easiest way is to use a set, right? आप एक सेट को यूज़ करो। सपोज आपके पास ये एलिमेंट्स हैं 100, 99, 82, 11 एंड 97। तो पुट दिस एलिमेंट्स इनटू अ सेट। अगर रेपिटेटिव भी हैं तो भी कोई बात नहीं, 100 एक और ले लेते हैं। सो पुट दीज एलिमेंट्स इनटू अ सेट। सेट क्या करेगा, सेट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन रखेगा और यूनिक एलिमेंट्स को रखेगा। तो आपने रखा 11, देन आपने रखा 82, देन 99, देन 97 एंड देन 100, राइट। क्योंकि सेट सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रखता है और सॉर्टेड रखता है। एंड उसके बाद रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट वन बाय वन। एक एक करके सेट में से रिमूव करो और उनको एक इंडेक्स असाइन करो। सो इंडेक्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1, इसको दे दिया 1, अगले को दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5। एंड ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर कर लो, एक हैश मैप के अंदर, ठीक है। तो हैश मैप में दिस बिकम्स द की एंड दिस बिकम्स द वैल्यू। एंड हर स्टेप पे क्या होगा, सेट से एक एलिमेंट पॉप होगा और इंडेक्स आपका हमेशा प्लस प्लस होता जाएगा और हैश मैप में आप रखते जाओगे, ठीक है। मैप ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर है इक्वल टू द इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आप ओरिजिनल एरे पे आइटरेट करो
इस एरे पे आइटरेट करो, आप देखो 100 को क्या नंबर दिया 5, तो यहाँ पे रख दो 5। 99 को क्या नंबर दिया 3, तो यहाँ पे रख दो 3। उसके बाद 82 पे क्या रखा है हमने 2, 11 पे क्या रखा है 1, 97 पे क्या रखा है 4 और 100 पे क्या रखा है 5। तो आप देख सकते हो कि 100 की जगह दोनों बार क्या आ गया 5। ठीक है, तो मैंने 6 नहीं रखा यहाँ पे बिकॉज 6 का आंसर चेंज हो जाएगा, तो हमने हमेशा 5 रखा बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन एक हैश मैप में स्टोर्ड है और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, राइट। तो प्रिटी इजी, राइट। So I hope this is clear to you guys, and this is the idea of this technique called coordinate compression, and I hope you will be able to implement this into your code. So try solving this problem in version count on Sponge using coordinate compression as well. Alright, so thank you for watching. I will see you in the next tutorial. Hi friends, in this video we are taking up a very interesting problem from Sponge which is updated, right? So let us see what is given in the problem statement. So this is the question on Sponge, and it says you have an array and initially all the elements of the array are 0, and you have to do number of update operations on it, and in every update you are given LR and value, right? So you have an array like this, and it says that from L to R you have to, you're given a value to be added. Suppose you say L to R में +5 कर दो, so every index which is initially 0 now in the range L to R will become +5. So you add value to all the elements from L to R, and after the updates are over there will be some queries containing the index for which you have to print the element at that index. तो सपोज यहाँ पे अपडेट आया यहाँ तक +2 करना है, राइट, और यहाँ पे हमने कर दिया +2 तो फाइनली ये जो एलिमेंट है इसका वैल्यू क्या होगा +7, राइट। तो वी हैव टू प्रिंट कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, राइट। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ सेकेंड केस, रेंज अपडेट एंड पॉइंट क्वेरी, राइट। मतलब क्या है कि अपडेट हम एक रेंज को कर रहे हैं और क्वेरी हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कर रहे हैं, इस चीज़ का ये मतलब है, राइट। तो नाउ यू हैव टू थिंक हाउ वी कैन डू दीज अपडेट्स, कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ टू अपडेट इट। अभी तक तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को अपडेट करते आए थे, 87 को हमने 10 कर दिया, बट हम चाहते हैं कि पूरी रेंज अपडेट हो जाए, राइट, सारे एलिमेंट्स अपडेट हो जाएं उस रेंज के। सो थिंक, पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, राइट। ओके, तो लेट मी डिस्कस कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सो आइडिया इज हमें एक वैल्यू ऐड करनी है, ऐड वैल्यू v टू अ रेंज a टू b, इस रेंज के अंदर या L टू R, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ मैंने एक BIT बनाया हुआ है जो क्यूमुलेटिव सम स्टोर कर रहा है, राइट। तो अगर हम बोलें कि लेट से ये इंडेक्स a टू b है और हम बोलें कि a पे मान लो पहले वैल्यू 10 पड़ी थी, अब हमें 15 करनी है, राइट, या जो भी है +v करना है हमें, राइट। तो वी नो कि अगर हम अपडेट कॉल करते हैं अपने BIT पे और इसको इंडेक्स a देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं +v, राइट, तो ये जो वैल्यू है ये लास्ट तक प्रोपोगेट करती है एज पर अवर लॉजिक, राइट, बिकॉज हमने लूप में लिखा था while i is less than n, तो ये वैल्यू सब में हो जाती है +v 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 +v, बिकॉज क्यूमुलेटिव सम स्टोर हो रहा है ना। तो अगर एक भी इंडेक्स अपडेट होगा तो आगे के सारे अपडेट हो जाएंगे, राइट। बट हमें कहाँ तक करना था, सिर्फ b तक करना था, इतने पार्ट में करना था, बट यहाँ भी अपडेट्स हो गए, राइट। तो उसको हैंडल करने के लिए व्हाट इज़ द टेक्निक, राइट। तो द आइडिया इज़ कि इतने पार्ट में मैं एक और क्वेरी रन कर दूँ विच इज़ कॉल्ड अपडेट b+1 विद वैल्यू -v, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -v -v,
तो इफ़ेक्टिवली इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे जो अपडेट्स हैं वो इस रीजन के अंदर डिफाइन कर रह जाएंगे, राइट। तो बेसिकली अगर आपके पास ए टू बी का अपडेट आता है, सो यू हैव टू कॉल अपडेट फंक्शन ट्वाइस, वन विद इंडेक्स ए एंड वैल्यू प्लस वी, and one with index b plus 1 with value minus v, right? So pretty cool, right? I hope this is very clear and intuitive. Now the second thing is how to query for a particular element. मतलब अगर query करना है, so query अगर हमें करना है तो ठीक है, क्या करना होगा, अगर इस इंडेक्स पे हमें पता लगाना है कि क्या एलिमेंट पड़ा है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सम देख लेंगे, राइट। तो वी विल जस्ट लुक फॉर द क्यूमुलेटिव सम टिल दैट इंडेक्स। बी आई टी यही तो करता है, बी आई टी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी सम बन रहा है वो हमें बता देगा, राइट। तो अगर हमारे इंडेक्स पे प्रोपोगेट होके दो अपडेट्स आए थे, एक बार +5 और एक बार +2 आया है, तो हो सकता है डायरेक्टली इस इंडेक्स पे आए हों या उनका कुछ पार्ट यहाँ पड़ा हो, राइट। हम अपने आई एंड माइनस आई वाले लॉजिक से पूरे इस पार्ट में आइटरेट कर लेंगे और जो भी सम बनेगा वो हम रिटर्न कर देंगे, राइट। तो क्वेरी भी हमारा क्यूमुलेटिव सम क्वेरी चलेगा एंड अपडेट भी हमारा वैसे ही चलेगा, राइट। तो I will suggest you to try to write the code yourself and let me know if you face any issues. So thanks for watching. I hope you will find this useful. Hi everybody, this is Pulkit from Coding Blocks, and in this video we'll be discussing this problem called Poshmark and Parmida's problem. This is a problem from Codeforces.com. You can open the link, read the problem, try it out before watching the video if you want to. I'll anyway be reading and explaining the solution. So let's read the problem. The first line is just a story. The actual problem is that we are given a sequence A that consists of n integers, a1 to an, and we have defined a function f of LRx which is equal to the number of indices k such that k is from L to R, and a of k equals to x. In simple words, f of LRx basically is the frequency of x from the indices L to R, right? The task is to calculate the number of pairs of indices ij such that I is less than j, and ij obviously lie in the range 1 to n, such that f of 1i ai is greater than f of j n aj. In other words, the frequency of ai from 1 to I should be greater than frequency of aj from j to n, right? If we basically label this term as pre of I, let's define pre of I as a frequency of ai from 1 to I, and let's define suf of I as a frequency of a of, let's say suf of j as the frequency of aj from j to n. Then basically we want pre of I to be greater than suf of j, right? As simple as that. And regarding the values pre and suf, we can calculate those in the time limit. We can calculate the values. Okay, let's discuss this when we are discussing the solution. So this is the question. The number of the size of the array can be up to 10 raised to power 6, and the values can be up to 10 raised to power 9, and they'll be positive, right? So we have to just simply print the number of pairs of indices which satisfy this problem. This point onwards I'll be discussing the solution. You can pause the video if you want to give it a try yourself. Let's see for an example. Let's take this example, it's a smaller one. In this case, if I consider the index, the pairs of indices, they can be 1 2 1 3 2 3, right? These are the pairs. If I consider 1 2, the frequency of 1 from 1 to 1 is 1,
and the frequency here is 2. 2 to 3 is 2, right? So this is not a valid pair because 1 is less than 2, and for this it is 1, it is again 1, so this is not also not a valid pair because 1 is equal to 1. And in this case the frequency here is 2, which is 1 to 2, and the frequency here is 1, which is 3 to 3 only, and this is a valid pair because 2 is greater than 1, so the number of pairs that are valid in this case is just 1, right? Now as we just discussed a minute ago, we want pre of I to be greater than sub of j. Now what I was trying to tell you there is that we can calculate the pre values and sub values for each index in an efficient manner. We can simply iterate in increasing order and keep the frequency of each element that we have encountered, and the pre of I value will just be the frequency of a of I that we have seen before I, right? That we have seen from 1 to I. And parallelly, for calculating the suffix values, we can simply iterate in the backward manner. I'll be making it more clear when I'll get to the coding part. So all in all, we can calculate the pre and sub values efficiently. After we have them, our target is to calculate the number of pairs ij such that pre of I is greater than a of and greater than sub of j, right? And to do that, what can basically be done is, if we iterate over j, if we look at the possible values of j, we want for a particular j, we want number of i's, right? I's from 1 to j minus 1, which satisfy the condition that pre of I should be sub of j, right? Or if I tell you in another manner, okay, let's take it this way only. We want the number of we want the number of I such that pre of I is greater than sub of j, right? And what I am basically trying to do here is that while I am at a particular index j, I would have already calculated my answers for the indices 1 to j minus 1, right? Calculated the number of i's for 1 to j minus 1, right? I would have processed those indices. Now when I am at a particular j, what I can basically do is I can store for each index that is less than j, store that what is the value of pre of I, right? And I basically need the count of all those i's which have pre of I value greater than the sub of j, right? For this, for doing this efficiently, what I can do is I can make a BIT, I can make a binary index tree in which my count of I will represent number of such IDs till now such that pre of ID equals to I. Okay, now if I have the count for every I, that if I have the number of IDs such that pre of ID equals to I, and if I know that if I know the value of sub of j, what I basically need is count of sub of j plus 1 plus count of sub of j plus 2 and so on up to count of n, right? I basically need the suffix sum of this array count from sub of j plus 1 to the last index, right? Because these will all be the values that are greater than sub of j, and count of these values will represent the number of such indices that have their prefix value, that have their pre value as this particular value, and what I basically need is the sum of all those, right? Now this can be done using a BIT, right? We just need an update operation, and we need to calculate the suffix sum, and we can basically subtract the prefix sum from the total sum to get the suffix sum.
I'll be clearing it out in a better manner while the coding part. I hope the basic intuition is clear now. Let's jump to the coding part and see how is it, how the code is implemented. The first input, first I'll take the number of elements in the array as input. I'll just input the all of the numbers. Now I'm calculating the sub and pre values over here. To do that, the sub values I am representing as left, the pre values I am representing as left, and the sub values I am representing as right. Now while iterating from 0 to n minus 1 in the in the order 0 to n minus 1, I am just making a, I'm just maintaining a map and int that is pre count and sub count, and I'll just simply increment the frequency of error I by 1, and the left of I will be equals to the current frequency of error I. And parallelly, while getting the right values, I'll iterate the array in the reverse order, and while iterating, I'll increment the frequency of error I by 1, and my right value will be equal to the suffix count of error I. Right now, by this line number 71, I have gotten the left and right values for each index. I'll initialize my answer with 0. Now I'm iterating for each index, for every index, and I am considering this index to be my j now, and I am going to calculate the number of i's that I can have, the number of indices less than this particular index that I can have. Basically I am going to calculate the number of IDs such that pre of id is greater than okay, in this case I'll say left of id is greater than right of I, and basically id is less than I, right? To do that, what I'm doing is I'm incrementing to my answer I minus query of right of I. The query of right of I is basically using a BIT. I have maintained a binary index tree here, and the query will give me the prefix sum, and the update will just update a particular value by will just increment a particular value by 1, right? And now I know I want my sum from I want the sum such that I want BIT of if the RGT value is, let's say, R, I want BIT of R plus 1 plus BIT of R plus, not exactly BIT, the count value of the count of R plus 1 plus count of R plus 2, and so on, right? And to do that, what I am doing is I'm getting the sum up to R, and I'm subtracting it from the total number of indices. The total number of indices that I'll have from 0 to I minus 1, 0 to I minus 1 will be I minus 1 minus 0 plus 1, right, which is I. So the number of the total number of indices will be I, and from this I am subtracting the prefix sum. So I'll get the suffix sum, I'll get the required suffix sum, and now after adding it to the answer, I'll just update the value at LFT of I by 1, right? And after having done it, I'll have my answer. I can simply print it. Now the sizes that I am taking are 10 raised to power 6, which is the maximum maximum value that n can have, right? I hope the solution is clear. I hope the code is clear. This is it for this video, guys. Thank you very much.